is basically an introduction to this topic. And as I mean, there are many topics which we will be covering in more details आगे चल के, मतलब ये कोर्स के इसमें हम लोग आगे चल के काफी डिटेल में जाएंगे, तो ये सिर्फ थोड़ा सा एक समरी है, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। ओके। थोड़ा सा इसमें बहुत सारा हिस्ट्री एंड देयर इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, दैट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मतलब आप उसको गूगल भी कर सकते हो, जस्ट टू मतलब जस्ट टू एम्फसाइज कि कितना इम्पोर्टेंट है दिस क्लिनिकल रिसर्च। ओके। So basically, if you are looking at clinical research, what is it? This is something that we are doing directly on humans or human tissues. That is live human research हम लोग कर रहे हैं, and that is why it is known as clinical. Clinical मतलब when you have your patients or your subjects who are humans involved. Okay. It includes studies of disease mechanism, मतलब what happens in a disease, what changes goes in the body, disease जब कोई बीमारी होती है तो क्या क्या changes आते हैं, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, वो क्योर करने के लिए क्या क्या अलग अलग तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी मतलब वो कितना प्रिवेलेंट है, कौन से पॉपुलेशन में वो बीमारी ज्यादा दिखती है, एंड क्लिनिकल ट्रायल्स विच इज it's like an experimentation of new improved maybe drugs, मतलब medicines या new treatment. So it is clinical trials are again experimentation aimed at understanding human disease and improving human health. So ultimately, the focus or the aim is always to ensure that we are getting better and effective ways to improve the human health. So we are looking at how we can further improve or further better the available things, available treatment, and how we can improve on them. Okay, or can we have something कुछ नया लेके आ सकते हैं क्या, ये जो है उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं? So as a definition, it is a branch of healthcare science, okay, that determines the safety and efficacy of medicines, devices, diagnostic products and treatment regimen. ये बहुत important है. We are talking about involving humans and human tissues, safety and effectiveness. मतलब वो it has to be effective, वो काफी यूजफुल होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इट हैज टू बी सेफ ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इतना इफेक्टिव है कि बंदा जो नॉर्मल ट्रीटमेंट, जो अवेलेबल ट्रीटमेंट में 2 साल रह सकता है, वो वही इतना इफेक्टिव है कि वो ना इतना पावरफुल है कि उसकी बीमारी तो निकल जाती है, लेकिन कुछ और आ जाता है जिसकी वजह से द सेफ्टी ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज एट stake. So that these two are very very important. It has to be safe, because if it is safe it may not be very effective. So if it is effective it may not be very safe. So ये balancing is very very important. These may be used for prevention, treatment, okay, diagnosis, or for relieving symptoms of a disease. For example, now you must have heard that finding newer ways of detecting cancer, because normally cancer you can you understand it only when it has reached the last stage, and then the treatment becomes really really difficult. So even diagnosis at an earlier stage, कोई भी बीमारी का जो डायग्नोसिस अगर हम लोग अच्छे से कर सके, पहले ही कर सके, तो वो ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट में हमारे काम आ सकता है। क्लिनिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके। In clinical practice, established treatments are used, which is clinical research evidence is collected to establish a treatment. So, what do you understand by practice? Clinical practice is what you have the doctors, the general practitioners, जो आपको treat करते हैं, जो आपके hospitals में जो doctors हैं, उनको बोलते हैं they are into clinical practice. और वो लोग उन ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जो हमने क्लिनिकल रिसर्च में ऑलरेडी
आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा बेहतर है. सो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग विच इज एस्टैब्लिश. हमने सेफ्टी एफिकेसी सब एस्टैब्लिश कर दिया है. एंड इन क्लिनिकल रिसर्च हम लोग वो सेफ्टी एफिकेसी डेटा को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. ओके, सो इट इज जस्ट लाइक आपका जो जब आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू जस्ट हैव अ फोकस. आपके पास एक एम होता है कि मुझे ये आउटकम चाहिए, उसके उसके लिए आप उसकी तरफ काम करते हो. और वही चीज जब आपको पता है कि ये और ये अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये आउटकम है, तो वो जो आउटकम जो यूज हो रहा है दैट इज क्लिनिकल प्रैक्टिस. आप मुझे आई मीन आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय स्पीड. तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द लैंग्वेज, इन द स्पीड, कभी भी कोई भी क्वेरी है, आप बीच में ही पूछ सकते हैं. यू डोंट हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन. आई एम फाइन टू इवन आंसर इट, बिकॉज अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आगे आगे लेक्चर लेके जाने में कोई मतलब नहीं है. सो आई थिंक दिस इज जस्ट बहुत सारे लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च, मतलब बहुत सारे फाउंडेशंस और टीम्स ने ये क्लिनिकल रिसर्च को डिफाइन किया है. बट इट इज मोर और लेस द सेम जो हमने यहाँ पे देखा है क्लिनिकल रिसर्च. ओके, सो लाइक डॉरिस ड्यूक ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिसर्च कंडक्टेड विद ह्यूमन सब्जेक्ट्स, पेशेंट ओरिएंटेड रिसर्च. तो यहाँ सब जगह आप देखोगे इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमंस. ओके, a national clinical research summit project terms it as a component of medical and health research intended to produce knowledge valuable for understanding human diseases, preventing and treating illness. सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स अलग अलग है. सो ये सब इतना दिखा है कि भले ही बहुत सारे लोगों ने उसके लिए डेफिनेशंस दिए हैं, but ultimately the core focus is that only, that you are doing experimentation or you're finding out newer and improved ways for prevention, treatment, diagnosis of diseases, and trying to make the human health much more better. ह्यूमन हेल्थ आप इम्प्रूव कर रहे हैं. ठीक है. तो कहाँ से ये सब शुरुआत हुई? मतलब इट इज नॉट लाइक सडनली क्लिनिक यू somebody got up and like let's do clinical research. ऐसे नहीं होता है. So there's always a history to everything. Okay, and clinical trial is like बहुत बहुत पहले ही हुआ करता था. मतलब जी, बिफोर क्राइस्ट, नो, तो बहुत पुराने से, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि वो लोग क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं. ओके, तो ये जो ट्रायल है, मतलब ये जो कोशिश है कि नो वी हैव टू फाइंड समथिंग बेटर, हैज ऑलवेज बीन, मतलब ये हमेशा ह्यूमंस का हमेशा एक टेंडेंसी रहा है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स कांट थिंक. सो आप मतलब हमारा जो ब्रेन है दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम no from the animals. Okay, so I think so this has always been so जैसे मैंने बताया कि ये बहुत पहले से ही लोग करते आए हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं. So the world's first clinical trial is recorded in the book of Daniel in the Bible, which resembled a clinical trial but was conducted by a medical, was not conducted by a medical but by king, a resourceful military leader. Okay, so in this in 1025 AD, in his encyclopedia Canon of Medicine suggests that in the clinical trial, remedy should be used in its natural state in disease without complication. He recommends that two cases of contrary types be studied and that study be made of the time of action of the reproducibility of the effect. So यहाँ पे भी जब ये किंग ने जब शुरू किया था, ओके, ही ऑलवेज वांटेड कि जो भी जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी रेमेडी है, इट शुड बी यूज इन इट्स नेचुरल स्टेट. मतलब नेचुरली उसका हमें ट्रीटमेंट देखना चाहिए, एंड वो इस तरह से वो डिजीज को क्योर करना चाहिए कि और कोई कॉम्प्लिकेशन ना रहे, मतलब सेफ होना चाहिए, कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए. The first clinical trial of a novel therapy was conducted accidentally by the famous surgeon Ambrose Speer in 1537 while serving with the, he was also in the army. Okay,
Oil was not adequate to treat all the wounded soldiers, and he was forced to use digestive made of yolks of eggs, oil of roses, and turpentine. Soldiers who received digestive medication felt but little pain. Their wounds never swollen or inflamed and had slept through the night. तो दिस इज ऑल्सो ये जो मिलिट्री काफी फाइट्स हुआ करते थे पुराने जमाने में. सो देर वॉज वन पर्टिकुलर ऑयल जो सारे सोल्जर्स के जख्मों पे लगाया जाता था, लेकिन वो ऑयल भी कम पड़ता था. तो फिर ये जो सर्जन है, इन्होंने कुछ और ट्राई किया, लाइक एग योक, ऑयल ऑफ रोसेस एंड टर्पेंटाइन. और फिर ये देखा गया था कि उनका जो भी घाव है वहां पे स्वेलिंग नहीं होता था, जिसको भी ये मिला था, ये वाला मिक्सचर मिला था. एंड पेन भी काफी कम होता था, एंड दे यूज टू स्लीप वेल. इसलिए वो जो ऑयल से ऐसा कुछ भी नहीं होता था, दे यूज टू स्टिल हैव लॉट ऑफ पेन. ओके, और वो क्या बोलते हैं, क्योर करने के लिए भी काफी टाइम लगता था. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ये आजकल की बात नहीं है, बहुत पहले से ही लोग एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट हमेशा ही करते आए हैं. James Lind is the first physician who said to have conducted controlled clinical trial. While working as a surgeon on a ship, was appalled by the high mortality of scurvy amongst the sailors. So ये अगर आप लोग फार्मा से है तो ये हमने आपने सुना रहेगा कि this was one of the classic case जहाँ पे ये डॉक्टर ने कंपैरेटिव स्टडी किया था. मतलब उन्होंने दो लोगों को अलग अलग, बिकॉज ही वांटेड टू नो कि स्कर्वी क्यों हो रहा है. स्कर्वी इज अ deficiency of vitamin C. Okay, and he was the first surgeon who ensured or who found out कि विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है, और अगर आप विटामिन सी सप्लीमेंट्स दोगे तो वो स्कर्वी ये निकल जाए. सो जैसे मैंने बताया कि काफी टाइम लगा. सो द वर्ड प्लेसिबो, ओके, प्लेसिबो, आई डोंट नो, आर यू अवेयर अबाउट द वर्ड प्लेसिबो? सो व्हेन यू हैव कंपैरिजन जब आप कर रहे हो, ओके, सो प्लेसिबो नॉर्मली बोलते हैं शुगर कोटेड पिल होता है. ओके, तो वहां पे कैसे जो एक्सपेरिमेंट में जो कर रहे हैं हम लोग, दवाई पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो दवाई हम लोग नहीं दिए देते हैं, बिकॉज हम लोग को फिर कैसे पता चलेगा कि what is the difference in the treatment. But that doesn't mean that the person is not treated. For example, if you have a of course ये हम लोग आगे जाके और डिटेल्स में करेंगे what is placebo and things like that, but I'll just give you a small understanding about it. So when you have a comparison, जैसे एंटी डायबिटिक ट्रायल कर रहे हैं, हमने एक नया मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया है जिस पे हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है. तो वील डिवाइड द ग्रुप इनटू टू. एक को हम लोग शुगर पिल देंगे, दैट इज प्लेसिबो, अलोंग विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट. सो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ट्रीटमेंट, वो भी हम लोग देंगे अलोंग विद द प्लेसिबो, बिकॉज हम लोग ये पेशेंट्स है, ये लोग हेल्दी healthy subjects नहीं है, ये they are patients, so we cannot leave them untreated. So one group will be on placebo and already existing medicine, already existing treatment. The other would be, instead of the placebo, they would be given the treatment drug. Okay, and where required, they would also be given the standard of care. जो already available है उसको standard of care बोलते हैं. Okay, so now you will be able to know सी कि कौन से ग्रुप में सबसे बेटर रिजल्ट्स है. सो ये जो वर्ड प्लेसिबो हैड अपीयर्ड इन मेडिकल लिटरेचर इन द अर्ली 1800s. सो इतना पुराना है ये वर्ड. It was only in 1863 that the United States physician Austin Flint planned the first clinical study comparing a dummy remedy to an active treatment. ये जो प्लेसिबो जो है वो इन्होंने 1863 में ट्राई किया था. बट इवन दो दैट वर्ड वाज ऑलरेडी देयर, द एक्सपेरिमेंटेशन और एक्चुअल प्रैक्टिस तब तक 1863 तक नहीं किया था. So this is just this was the, like in 1943-44 there was this first double blind comparative trial with concurrent controls in the general population carried out in 1943. So what do you mean by double blind? Is that जो ट्रीट कर रहा है उसको भी पता नहीं रहता है कि
कौन से पेशेंट को दवाई मिली है, मतलब वो नई दवाई मिली है, और कौन से पेशेंट को हमने प्लेसिबो स्टैंडर्ड ऑफ केयर में डाला है, ना ही पेशेंट को पता रहता कि वो क्या दवाई ले रहा है. ओके, सो दैट इज डबल ब्लाइंड. The idea of randomization was introduced in 1923. Now, randomization is again कैसा होता है कि अगर मैं डॉक्टर को जानती हूँ और उनको पता है कि आई हैव अ वेरी सिवियर ब्लड शुगर लेवल्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर बोलेगा कि नहीं नहीं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन ड्रग नहीं देते, लेकिन इसको क्लिनिकल ट्रायल में ले लेते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में ले लेते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड. ओके, so, but then I will not give this lady the trial drug. I'll only give the placebo and the standard of care because I don't want to take any chances. तो ये कैसे bias होता है, okay? तो तभी ये जो idea of randomization है, randomization मतलब patients जो भी है उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और किसको क्या मिल रहा है ये किसी को पता नहीं, तो रैंडमली उनको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में, तो ताकि जो बायसेस है वो निकल जाए. The ethical framework for human subject protection has its origin in the ancient Hippocratic Oath, which specified a prime duty of a physician to avoid harming the patient. तो जैसे मैंने बोला कि सब जगह बेसिक एम हैज ऑलवेज बीन, भले ही आप नई चीजें लेके आना चाहते हो, लेकिन इट शुड नेवर इम्पैक्ट द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट. द पेशेंट शुड नॉट बी हार्म्ड. Any questions so far? Okay. I think evolution of ethical and regulatory framework. So जैसे जैसे क्योंकि humans involved थे, okay, there were lot of regular और बहुत सारे malpractices भी होते थे. I mean, there were many doctors or many industries who started doing lot of malpractices also. मतलब गलत गलत चीजें किया करते थे, and that was impacting the human population. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट एथिकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा है क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स में. तो व्हाट हैपेंस इज दैट वी एंश्योर that everything is done as per regulations, because we are talking about lives, okay, of patients. So all this is again many organizations, many groups have come up with lot of code of conduct and regulatory framework. Of course, we will have a separate session on regulatory framework in clinical trial in the course of this in the as we go through this course. Okay, but this is just a क्या बोलते हैं just a starting. Okay, wherein you will find Nuremberg code आया था, then you have the universal declaration of human rights. Okay, then you have Keffer Harris amendments. So this was after the thalidomide tragedy. Okay, the thalidomide tragedy, I'm not sure whether you are aware, but again, this was also something. It was not an experiment, but then there was this German company जिन्होंने ये pill निकाला था. It was जैसे anti-emetic था, मतलब it used to prevent nausea, vomiting. So it was a very safe drug according to the company. And what happened that one of the doctors started giving it to pregnant ladies जो like in pregnancy कभी कभार morning sickness होता है, morning में you feel like nausea, vomiting भी होता है, लेकिन ऐसा feel होता है कि मैं vomit करूं, उसको morning sickness बोलते हैं. तो when they gave it to them, they said that this was a wonder drug क्योंकि ये हमारा morning sickness भी निकालता है, and we can sleep very well in the night. मतलब बहुत अच्छे से नींद भी आती थी. So this was something added, मतलब this was never said कि आप pregnant ladies में use कर सकते हो उसको. And then what happened, the doctors started prescribing it to pregnant ladies, and this was followed by other doctors also. तो जो भी pregnant lady would come saying that I have got morning sickness, I'm not able to sleep
well, they used to be given this drug. And unfortunately, what happened was it had a very teratogenic effect on the growing child of the mothers of these pregnant ladies, and they were born with unformed limbs. ओके, मतलब उनके हाथ पूरे डेवलप नहीं हुए थे, उनके पैर पूरे तरह डेवलप नहीं हुए थे, एंड दे वर born with deformities. So that is known as thalidomide disaster. Okay, this was a very important black spot, I would say, in this entire pharmaceutical industry, जहाँ पे सारे regulatory authorities जो है, they woke up and then they realized कि you cannot be experimenting without, मतलब डेटा के बिना आप किसी को वो ड्रग नहीं ऐसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो. तो देन बहुत सारे कोड्स आए, बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे आपको क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करना है, किसके बाद आप उसको मार्केट कर सकते हो, आपके पैकेज इंसर्ट में क्या क्या होना चाहिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे. सो एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको आप कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे टू द मार्केटिंग थिंग. ओके, एवरीथिंग इज नाउ रेगुलेटेड. सब कुछ हेल्थ अथॉरिटी ने रेगुलेट कर दिया. Helsinki, the World Medical Association articulated general principles and specific guidelines on use of human subjects in medical research. तो अब जहाँ पे भी देखोगे, it is all about how you're supposed to use human subjects in medical research. You have to ensure that they are not impacted. In 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights specifically stated no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his consent to medical or scientific treatment. दिस वॉज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे बोला था कि जब तक पेशेंट खुद मान ना जाए, उनका जब तक कंसेंट ना हो क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होने का, यू कैन नॉट कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन दैट पर्सन. ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो अगर कंसेंट मिलना है तो वो सब्जेक्ट को आपको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह बताना जरूरी है. Then you had the Belmont Report of 1979, the U.S. National Research Act of 1974, then in 1996, International Conference on Harmonization, ICH. This is very, very important. This is one of the Bibles for clinical research, for everything. Okay. Pharmaceutical companies, manufacturing, everything. This is very, very important. This published the good clinical practice, which has become the universal standard for ethical conduct of clinical trials. मतलब ये जो ICH है, it has been adopted by the US FDA or the EMA, the European. तो ये दो major क्या बोलते हैं उसको health authorities है. But you have lot of, like, you have the TGA in Australia, you have the Canadian Health Authority. There are many health authorities. जापान का अलग होता है. तो ये आईसीएच ने जो भी डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, इट इज नॉर्मली यूनिवर्स, मतलब इट इज अ स्टैंडर्ड. जैसे हम लोग बोलते हैं ये हमारा भगवत गीता है, ये हमारा बाइबल है, वैसे आईसीएच इज द बाइबल एज टू हाउ यू आर सपोज टू कंडक्ट क्लिनिकल रिसर्च, हाउ यू आर सपोज टू डू marketing of the product, what are the information, how do you get information from about safety and efficacy of the drug. Everything is there in this. Now coming to the importance. So you so the history started long back, and with as time went by, health authorities also realized कि कितना important है clinical research. क्योंकि अगर जब तक आप experiment नहीं करोगे, आप वही वही पुराने तरीके ही इस्तेमाल करते रहोगे. So you need to have some changes. You need to bring about changes in the you have to improve whatever is available. मतलब obviously sorry, obviously you cannot be relying on the old age, like तब पहले हम लोग चलते थे, फिर हमने नो साइकिल्स ये डिवाइस किए, then motorbikes, then cars, and now you have trains, you have flight. Okay, so there has always been improvement for the betterment of the human community. वैसे ही
अगर आप पुराने जमाने के ट्रीटमेंट पे ही हम लोग, यू कैन नॉट बी रिलाइंग ऑन दैट, बिकॉज वैसे भी जैसे जैसे नया नया जनरेशन आ रहा है, नए नए डिजीजेस भी आ रहे हैं, राइट? और जो पुराने डिजीजेस है वो थोड़े और स्ट्रांग हो गए, जैसे आपने कोविड का ही देखा रहेगा, दैट द फर्स्ट वन वाज, of course it was a surprise, so there were a lot of deaths. But then जो second variant जो आया था, that was deadly, because even the viruses, वो बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. तो even there is change in the virus, the bacteria that is coming up. So आपका ट्रीटमेंट पुराना जमाने का ट्रीटमेंट तो नहीं चलेगा. You have to have improved treatments. So it enhances our understanding of human physiology and pathophysiology and translates basic research into medical care. Okay, so जो आप इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर और जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बॉडी में, ये आप स्टडी करके यू आर पुटिंग दैट, you are identifying new ways. Okay, and then that is then converted into medical care. मतलब आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो हम लोग बोल रहे थे उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो. Quality of patient care is more regulated in clinical research with the use of sophisticated instruments. जैसे मैंने बोला इतने regulations है, तो यहाँ पे अभी मतलब बैड मैल प्रैक्टिसेस या गलत तरीके कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहे. मोर ऑफ डेटा ओरिएंटेड देन क्लिनिकल जजमेंट. मतलब आप डेटा भी देख रहे हो, आप यू आर कलेक्टिंग डेटा, यू आर लुकिंग एट द डेटा एंड देन यू आर टेकिंग अ डिसीजन. ना ही कि सिर्फ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, आप सिर्फ वो नहीं ले रहे हो. ओके, सो वी इट इज ऑल डेटा ड्रिवन. सपोर्ट सोसाइटी फॉर बेटर टुमारो आइडेंटिफाइज बेटर डायग्नोस्टिक टूल्स एंड प्रिवेंटिव केयर. जैसे मैंने बोला, देयर इज ऑलवेज एन इम्प्रोवाइजेशन दैट इज सीन. व्हाट आर द अकम्प्लिशमेंट्स? Research in human physiology and pathophysiology translates basic, okay, this is I think the same. It translates basic research into knowledge of disease mechanism and medical therapeutics. So जो भी आपको knowledge मिलता है ये researches से, उसको आप practical application में डाल सकते हो in the clinical practice. Clinical trials establish safety and efficacy of new intervention. Okay, new intervention मतलब नए तरीके. Epidemiological and behavioral research identify high-risk population with potential to benefit from prevention, early detection, or therapeutic intervention. So it's not only about, जैसे मैंने बोला, it is not only about finding new drugs. It is also about epidemiology and behavioral as research. तो आप ना एक पॉपुलेशन के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता चले कि ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये बीमारी होना बहुत बहुत, देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग दिस दिस डिजीज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, उनका जो खाना है. तो कोई कोई बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, यू मे हैव पर्टिकुलर डिजीज प्रिवेलेंट आउट देयर. तो अगर आपको पता है कि ये पॉपुलेशन में ये डिजीज प्रिवेलेंट है, तो व्हाट इज इट दैट यू कैन डू इन ऑर्डर टू identify that earlier and also to prevent it in the coming generation. Outcomes and health services research assesses the health impact and cost effectiveness of intervention. तो हम लोग यही सिर्फ नहीं देखते, हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर नया ट्रीटमेंट है तो वो कितना बजट के अंदर आता है. मतलब अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो then there's no point, because it has to be affording also to patients. It has to be affording, it has to be safe, at the same time it has to be effective. Okay? So पर अलग अलग तरीके के रिसर्चेस होते हैं. Physiological research. So these are some of the research examples or definitions. Okay. So these are carefully controlled studies in patients or normal subjects that are intended to understand basic physiological mechanism and the disruption in human disease. So जैसे मैंने बोला कि आपका एक pathway है, maybe a digestive pathway है, तो आप उसकी भी उसका भी स्टडी कर रहे हो. एंड देन यू आर स्टडिंग, जैसे आपने एक हेल्दी वॉलंटियर, हेल्दी सब्जेक्ट को लेके आप देख रहे हो कि व्हाट इज द, और मे बी यू आर आल्सो लुकिंग एट पैनक्रियाटिक कैंसर. सो यू आर लुकिंग एट व्हाट इज द एक्चुअल सिस्टम, एंड देन यू आर लुकिंग एट अ कैंसर पेशेंट एंड सीइंग कि जब
वो बीमारी होती है तो वो पेशेंट का कौन सा पार्ट इम्पैक्ट होता है, विच इज द पाथवे दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, दैट इज फिजियोलॉजिकल रिसर्च. Translation of basic research finding to human subjects to confirm the human relevance of proposed disease mechanism which will inform scientifically targeted medical therapeutics. तो जब आपको पता चलता है कि ये changes होते हैं ये बीमारी में, then accordingly आप उसके लिए जो भी treatment है वो आप specifically you can identify. This work is usually done through general clinical research centers and informed clinical trials. Population research. So this is about the entire population. So epidemiology and behavioral research to identify high risk population with potential to benefit from early prevention, early detection and intervention of established disease processes. तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग पूरे पॉपुलेशन में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये डिजीज बहुत ही प्रेवेलेंट है, लेकिन ये कौन से टाइम पे ये पेशेंट्स इम्पैक्ट होते हैं. अगर हमको वो पहले ही पता चलता है तो how you can prevent it further. Outcome and health research. So this is again we have already seen it in the previous slide जहाँ पे हमने बोला था we are also looking at जो treatment available है वो effective भी होना चाहिए और cost effective भी होना चाहिए. मतलब patient का भी फायदा होना चाहिए और pocket पे भी हल्का होना चाहिए. Clinical trials. Research that prospectively assigns human subjects to intervention concurrent comparison control groups to study the cause and effect relationship between a medical intervention and health. So clinical trials are normally done to understand improved treatment ways, different treatment ways. Okay. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यू कैन हैव कंपैरिजन, दो ग्रुप में पेशेंट्स को डिवाइड करके फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये ग्रुप इज ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन ड्रग और एक्सपेरिमेंटल द न्यू ड्रग एंड दिस पेशेंट दिस ग्रुप इज ऑलरेडी ऑन द ओल्ड ड्रग एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज सीन. ओके. This also is very very important. So why clinical research and clinical trials? Okay, so clinical research is definitely basis on whatever information that you have got. आपको आप जैसे मैंने बताया कि आपको पता है कि ये बीमारी है और इस बीमारी में ये टिश्यू इम्पैक्ट हो रहा है, ह्यूमन टिश्यू, फिजियोलॉजिकल रिसर्च से आपको पता चलता है. नाउ आपका एम है कि आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट लेके आना है या ऐसा कोई दवाई लेके आना है जो वो प्रिवेंट करे, वो जो चेंजेस आते हैं टिश्यू में वो प्रिवेंट करे. उसमें आप नए मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं, ड्रग डिस्कवरी. ओके. तो so when you have a aim, okay, then you are finding out molecules in order to ensure कि आपको जो आउटकम आपने सोचा है वो आपको मिले. तो उस दौरान आपको हजारों लाखों ड्रग्स मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं. ओके. देन यू हैव टू स्टार्ट स्क्रीनिंग, मतलब हर आप इतने सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. तो उसमें से आपको गिने चुने लेने पड़ेंगे, मतलब 50-100 अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको क्लिनिकल एनिमल स्टडीज करना है. प्री क्लिनिकल इज एनिमल स्टडी, इन लैब स्टडी. ओके. जहाँ पे आप देख रहे हो कि हाउ इज द क्या बोलते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑन द डिजीज एंड वेदर देर इज एनी टॉक्सिकोलॉजी भी देखते हैं कि हाउ डेंजरस कैन इट बी, कौन से लेवल, विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ ड्रग दैट कैन बी टॉलरेटेड. तो ये सब हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडीज में करते हैं. ओके. Then, so as you go through the stages, drug discovery to preclinical studies, जो भी आपने यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल्स रिसर्च किए हैं वो नैरो डाउन होते जाते हैं. Then you have to do clinical studies. Okay. Clinical studies is again in humans. Preclinical is animals. Clinical is humans. तो क्लिनिकल स्टडीज नॉर्मली नोन एज क्लिनिकल ट्रायल, जहाँ पे आपके फेजेस होते हैं. अगेन वी विल बी गोइंग थ्रू इट लेटर ऑन in details. So you have phase 1, phase 2, phase 3. Then with whatever information that you get, you have to, if you think कि ये बहुत अच्छा molecule है,
और ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, देन यू do a submission to the health authority. And if the health authority says, okay, now you can market it, but you have to still continue doing post marketing study, which is known as the phase 4 study. So this entire thing takes around 12 से 15 साल तक जाता है, ये पूरा ड्रग डिस्कवरी से लेके उसको मार्केट तक आने के लिए, एंड देन इन द मार्केट इट रिमेन्स लाइफ till the time that the company feels it should be withdrawn. Okay, obviously there's a lot of time, lot of cost, and success rate भी you never know. कभी कभार ऐसे भी होता है कि 2-3 मॉलिक्यूल्स फेज 1 में आए हैं और फेज 3 में आता है तो एक ही मॉलिक्यूल बचा है, और वो भी इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो गए हैं कि वो यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया है, तो वो फेज 4 तक पहुंचे ये जरूरी नहीं है. ओके, so phase 1, it's first time test of intervention in a small group of people to evaluate safety, determine appropriate dosage and identify side effects. Okay. So phase 1 is normally in healthy humans. Okay. So healthy humans मतलब it is more about healthy volunteers, जहाँ पे उनको बीमारी नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी देखना चाहते हैं कि ये मॉलिक्यूल और कोई साइड इफेक्ट पैदा करता है कि इन द volunteers. Okay. Phase 2 is normally then you start using it in smaller patients actually. Okay, यहाँ पे patients involved नहीं है, यहाँ पे patients आने लगते हैं. तो जैसे जैसे आप next इसमें जाते हो आप उसका जो patient का जो pool है वो बढ़ता जाता है. ठीक है. एंड फेज 3 ट्रायल्स इज द मेजर वन जहाँ पे आप बहुत बहुत बड़े ग्रुप में आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो. फेज 4 ट्रायल्स एज आई सेड कि मार्केटिंग अप्रूवल मिल गया है और उसके बाद जो आप स्टडी करते हो उसको फेज 4 बोलते हैं. सो पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज डिटरमाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिस्क, बेनिफिट एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ एन इंटरवेंशन. जैसे हमने बताया था दैट when you're doing a clinical trial it is just like an experimentation. So when you're doing an experimentation in a lab, how is it कि हवा नहीं यहाँ से हवा नहीं आनी चाहिए, यहाँ से लाइट नहीं आना चाहिए, so you have all those controls. When you're doing clinical trials also there's lot of control in conducting clinical trials. Okay, so but when it comes to phase 4, because it is already marketed, okay, it is a post marketing study, there are no controls. तो अभी जो रियल टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी चेंजेस पेशेंट्स में दिख रहे हैं वो मॉलिक्यूल के से वो आपको कैप्चर करता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट फेज 4 ट्रायल्स आर डन. ओके, so where are clinical trials conducted? In hospitals, public and private. In clinic, of course, if you should have good facility, medical colleges and institutions. So researches, trials, ये medical colleges institutions में होते हैं. Yeah, any questions? Yeah, Ma'am, I have a question. sure. Ma'am, my question is that why we need to conduct a trial? At a gene level, everybody is different due to their genetic profile. So if we made a drug, so it is not going to beneficial for two different people, no? Because they have a different genetic profile. So when you're talking, so you are talking about a very advanced thing known as gene therapy. Okay, and that is very very important when you are looking at all these lifestyle diseases like a cancer, because which is impacting how you can prevent no genetics from entering into that cancer phase. But if you're talking about, there are other diseases also. Okay, like for example, when you have a pandemic like a COVID, you cannot just get a vaccine out. You have to do some experimentation because you have to do it on you remember that we almost took 6 to 8 months, but that was the fastest vaccine that was produced in this. In some of the diseases the gene therapy doesn't work. Clinical trials is very very important. And again, I'll give you another example. As I said, when you're doing a clinical trial, you're not doing it only in Maharashtra, you're not doing only in Pune. Okay, you're doing this in
sites across India wherein you have different kind of population, different lifestyle, different genetic material. Okay, you're doing it in south, you're doing it in north, you're doing it in the east, you're doing it in the west. Okay, plus you're also doing it. It's a global thing that we are doing it. So जो आपने 1000 3000 जो number देखा है, it is not only from India. It is globally that you're looking at, because you have to do that experimentation, because you cannot be doing a gene therapy or a gene genetics. आप हर एक का genetics आप नहीं देख सकते हो. So these are required for targeted treatment जहाँ पे, and this is something which is advanced, which is coming up now. Okay, but clinical trials is very very important, especially for different kind of diseases, apart from where you need the gene therapy. Okay. Rohit, you want to add on something to this question? What's your name, ma'am? Shweta, ma'am. Shweta. I think it's a good question. Yes, madam. Actually, what happens, Shweta, that you are correct. Gene should be evaluated. That's why we are doing globally clinical trial, because we cannot look into that gene, but basic receptors in our body is same. Where that receptors or where targeted, where we would like to target our drug, these are almost same. Definitely, gene structure is maybe different for everything, but chromosomes you can see is the same. Gene sequencing may be different, but basic target is same. So that's why we are conducting our trial in globally in different locations, so we can get if there is any impact of gene on the drug or any hereditary on the drug, so we can find this variation, and then accordingly we can look into that. I'll give an example to you. I'm not remembering exact the name of drug. In Japan, one place is there where if you will give that drug to that population, you will find all of a sudden Steven Johnson syndrome is appearing very commonly in these populations when you are giving a particular drug. While in other countries or any and other places, this symptom or Steven Johnson syndrome is not occurring. So वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जीन का इफेक्ट आ रहा है उस ड्रग के ऊपर. But with this particular gene को लेके, you know that every person's gene is totally different. तो 200 billion और वो जितने भी population है, it's not possible कि हम लोग उन gene पे लेके therapy को कर सकें. Are you getting? Yes, sir. Thank you. And I think, Shweta, when you're talking about clinical trials, it is definitely, or clinical research for that matter, and gene therapy for that matter, is more for the treatment, right? So, but then you are also in need of new diagnostic tools. You're also in need of different ways of preventing it. Okay, not only just treating, but you're also looking at how you can prevent it. So if you have a already a prevalence population कि यहाँ पे ये होना ही है, so then how is it that you can ensure that no, it is being prevented? So for that you cannot be, so if you enter into genetics every time, it may be a little difficult, and it is definitely a costly affair. Everybody cannot afford it, right? Okay. I hope you are satisfied with the answer. Oh. Hello, Shweta, can you hear me? Okay. I hope I'm audible, right? Rohit sir? Yes, ma'am. We Okay, can okay, hear fine, you. fine. Okay, so stakeholders in clinical trials. So as we said that there are a lot of regulations which are revolving around trials. So regulatory agency is definitely very, very important. We also have the institutional ethics committee. Again, we said that we have to do clinical trials in an ethical manner. And for that, we have ethics committee who are the voice of the patient, or you who are looking at the entire clinical trial in a holistic way without any biases, because उनका कोई interest नहीं रहता है इसमें. Okay? Investigator and team, okay, जहाँ पे ये clinical trial conduct हो रहा है.
and the sponsor's representative. So whoever is funding it, okay, it can be the sponsor, it can be even the health authority who is funding it, but then they will also have a supervisory um, team and an effective team who is having an oversight on this clinical trial. So basic and clinical research are interdependent. Okay. So basic research gets into and clinical research, and it is equivalent to improved health. Okay. So basic research translates from basic science to human study. So जो आपका knowledge है वो आप human studies humans में कैसे use कर सकते हैं ये देख रहे हो आप. And when you're doing the research, clinical trial, clinical research, you can use that knowledge of human studies into actual practice in the real world, okay, which will help in improved health. So who approves clinical trial? As I said, it is regulatory agency. Okay, for India, I have given this information out here. It is the Drugs Controller General of India. And we also have a very, very extensive regulations revolving around clinical trial, which is the which is defined in the new drugs and clinical trial rules of 2019. And you also require the ethics committee approval for conducting any clinical trial. जब तक एथिक्स कमेटी का अप्रूवल नहीं है, हेल्थ अथॉरिटी आपको अप्रूवल नहीं देगा टू कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल. तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, एज आई सेड कि ये हम लोग और डिटेल्स में आगे आगे जाके लेंगे. ओके, सो यू हैव द प्रोटोकॉल जो बताता है व्हाट इज द स्टडी डिजाइन, व्हाट आर द काइंड ऑफ पेशेंट्स, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर you for including patients in the trial, entire design कि कैसे conduct करना है, what are the what are the visits and things like that. Investigators brochure, okay, जहाँ पे सब information दिया जाता है. 1 minute. Okay. Informed consent form, जैसे मैंने बताया कि without the patient's approval, consent, no clinical trial can be conducted. Then you have the case report form, which details everything that is happening to a patient. Patient diaries, which is filled up by the patients on a day-to-day basis. Insurance certificate, because you have to give guarantee that if anything goes wrong to the patient, it is entirely taken care of by the sponsor. So every clinical trial phase 1, phase 2, phase 3, all of them have all these different steps. You have the startup phase, you have the initiation and recruitment. Okay, जहाँ पे आप startup phase मतलब you have to train the investigators, the team, set up everything out there, inventory वगैरह सब set up करना चाहिए, देखना चाहिए कि drugs कहाँ पे स्टोर होंगे, बराबर टेम्परेचर में स्टोर होंगे कि नहीं. सो स्टार्टअप मतलब preparing the entire site. Then you have initiation and recruitment. Then you start initiating patient screening. Okay, उसके लिए सारे patients जैसे even if it is an anti-diabetic drug, every diabetic patient cannot enter into an anti-diabetic trial because there are some inclusion exclusion criteria. So you start screening the patients, और जो भी required test है, it is all there in the protocol. वो सब कंडक्ट करने के बाद जो भी अवेलेबल, आई मीन जो भी criteria match karta hai, only they are included in the trial and they are recruited to be in the trial. Then you start with giving the medicines to the patients, and then you have to follow up on regular intervals with the patients. And then you have to, जैसे आपने already decide किया कि ये मैं 10 महीने के लिए करूंगा, 2 साल के लिए करूंगा, जो भी है. So by the end, when the experiment is almost about to end, when the trial is about to end, then you have to close out the phase. तो आपको वो साइट पूरा क्लोज करना पड़ेगा. जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा थ्रू आउट आपको मिला है, वो तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना ही है. ओके, प्लस टुवर्ड्स द एंड देयर इज अ डेटाबेस लॉग, जहाँ पे सारा डेटा जो भी मिला है उसका इवैल्यूएशन होता है. फिर अगर उसमें कोई भी क्वेरी है वो क्लियर होता है एंड थिंग्स लाइक दैट.
So clinical trial startup phase, it starts with feasibility. मतलब जैसे अगर जैसे अभी बोला कि देर इज अ जीपीपी, जनरलाइज पस्टुलर psoriasis. Okay, this is a this is a skin disorder, but is it even prevalent in India? So ये वो clinical trial conduct करना feasible है कि नहीं है in the country, that is also important. You cannot be doing experiment just कि यूएस में prevalent है, जापान में prevalent, तो इंडिया में भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो you have to see whether जो भी molecule आता है, whether वो disease है, feasible है कि वो हम लोग clinical trial conduct कर सकते हैं. Will we get patients? Okay, to be a part of the clinical trial. So that is known as the feasibility phase. जहाँ पे the clinical operations team would be evaluating whether that molecule, whether we should be conducting the clinical trial or no. Then if you feel that yes, you should, then you have to start looking at sites and investigators. So investigators should be well qualified to conduct the trial in that particular disease. They should be able to they should be treating such kind of patients, because उसके ऊपर से साइट्स डिसाइड करते हैं कि ये साइट पे ये पेशेंट्स आते हैं, ये डिजीज के पेशेंट्स आते हैं, तो मे बी वी शुड सिलेक्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल. Once this is set up, then there are many documents which have to be submitted to the health authority and the institutional ethics committee for approval. Okay, collection of essential documents. So throughout the जैसे बहुत सारे अंडरटेकिंग्स लेने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेटर से. सो जो भी जैसे यहाँ पे आपने सबमिशन सिर्फ अप्रूवल सॉरी प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर का किया है, लेकिन देन यू आल्सो हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्म कंसेंट, you have to provide the undertaking, the investigator resumes, undertaking by the investigators, undertaking by the sponsors. There are many documents, okay, and receipt of approval from IEC and DCGI. So this is all that is there in the startup phase. Clinical trial initiation and recruitment. Initiate the site. Okay, start recruiting of patients. Okay, so initiate the site is, again, as I said, you have already selected the site. अभी उनके वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देना है, उनको तैयार करना है to start the clinical trial. Then start the recruitment of the patients. एक्टिव मॉनिटरिंग एट साइट, मतलब जो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट है उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है. एवरी month they have to travel and they have to see that all the clinical trial is running as per the protocol, as per regulations, as per the SOPs. Okay, and in between we also do audits in order to just ensure that everything is going fine. Again, as I said, like, we have a separate session on audits also. फॉलो अप फेज, रिक्रूटमेंट तो कंप्लीट हो गया है. तो अगर मुझे ये साइड से 10 पेशेंट्स चाहिए थे, तो ऑल द 10 पेशेंट्स आर ऑलरेडी देयर, it is completed. Now the patients have already started on the treatment, so now we have to keep on following up. So there are visits which are planned कि ये हर हफ्ते में आपको ये दिन आना है. Okay, and active monitoring by CRA continues. So again, you have to continuously see that all data is in the CRF and it is no queries. Everything is very crystal clear. CRF is case report form, which is the report form of the patient. Then once everything is done, follow-up phase भी complete होता है. Then you have the database log, जहाँ पे और कोई information जाता नहीं है into that trial database. And then you have to close out the site. Patients, last patient का भी treatment खत्म हो गया. Now we have to close the site. You have to collect all the documents, ensure that everything is archived properly. Okay. That is what is the next point, that is archival of study documents. So जो भी वो साइट पे ही रहेगा, लेकिन वो अच्छे से आर्काइव करना बहुत जरूरी है. Very important while doing a clinical trial is, as we have always been seeing, is the safety and efficacy of the trial. So safety is an integral part of clinical trials, clinical research, preclinical studies. Even when we are doing animal studies, we are also looking at safety. Okay.
सो एडवर्स इवेंट्स, अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है वो कैप्चर होना चाहिए. Serious adverse event, these are very very important, and these serious adverse event also have to be reported to the health authority, and we have timelines for that. Okay. Non-serious, they are captured in the CRF. They are not submitted to the health authority. लेकिन at the end of the trial, all of them are evaluated. सेफ्टी लेटर, सो ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने बोला, जैसे अभी डॉक्टर रोहित ने भी बोला दैट वी आर डूइंग अ ट्रायल ग्लोबली. तो ऐसा भी हो सकता है कि देर इज सम इशू एट इन जापान, सम इशू इन द यूएस विच इज नॉट अफेक्टिंग द पॉपुलेशन इन इंडिया. बट देन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है जो फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, it has to be shared with the investigators who are involved, because they have to be aware, so that they are just careful. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन लोगों को कुछ भी बताया नहीं, नहीं कानो कान खबर नहीं हो चाहिए. इट हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल ट्रायल कैन नॉट बी डन अंडर रैप्स. मतलब आप छुपा के कुछ भी नहीं कर सकते हो. एवरीथिंग हैज टू बी ओपन. तो सेफ्टी लेटर्स जो है ये हेल्थ अथॉरिटी को भी जाना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए कि ऐसा यहाँ पे हुआ है ये ट्रायल में, मे बी डेथ और वेरी सीरियस एडवर्स एनाफिलैक्टिक शॉक, मे बी वन केस, लेकिन हम लोग बताते हैं कि ये इशू हुआ है यहाँ पे, and we are ensuring that we have kept all the investigators informed about it, and they would be careful कि ऐसे हमारे patients में ना हो. Okay? So I think after this I would hand it over to Rohit, if you could take it. Hello. Yes, yes, madam. I'll take it. Okay. I'll just mute myself once. So thank you, madam, for taking us to very brief information on clinical trials. What is clinical trials? Why we are doing it? What is the need to do all these activities or these studies? Actually, what was the requirement? How we do? What is the phases? So now we will see what is the clinical trial versus medical treatment. मतलब क्या difference है medical treatment और clinical trial में? Okay. So in clinical trial, answer specific questions through research involving numerous research volunteers. So basically, हम लोग clinical trial के through we will answer specific questions के whether this drug is effective or not. If suppose for blood pressure we are doing any trial, so what is currently available drug is there. If new drug is having more benefit to this current drug, then we are going to come up with this new drug. Otherwise there is no mean कि हम लोग अगर पुरानी ड्रग और नई ड्रग में कोई डिफरेंस नहीं है इधर इन सेफ्टी और एफिकेसी, तो कोई मतलब नहीं है ये सब एक्सरसाइज करने का. तो हम लोग का क्या प्रायोरिटी रहती है, आइदर इट शुड बी लेस, it should be less side effect or as per current or more potency or more effectiveness. So this is the specific answer we are giving. It is generally designed and intended to benefit future patient. If any future patient is coming, it will benefit to them. Sometimes drug developers or government agency paid to the patient to participate in the clinical trial. So so basically that patient is getting benefited from the medicine. At the same time of their financial needs is also being taken care by them. तो उनको थोड़ा financial benefit होता है. Then time frame depends on research protocols. So basically time frame, there is no specific time frame for के इतने time पे clinical trial होगा. Some clinical trials finishes in जैसे वैक्सीन है, it is single dose clinical trial. कुछ वैक्सीन है डबल डोज है, कुछ मंथ चलता है, कुछ ईयर चलता है, कुछ ईयर्स चलते हैं. So basically depend upon the molecule or depend upon the protocol how the study has been designed. But what is happen in medical treatment, वहाँ पर अपना प्रायोरिटी क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल यू हैव एस्ट्रिंजेंट इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. यू शुड नॉट हैव कोई आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई अदर ड्रग नहीं लेनी चाहिए. यू शुड बी 18, यू शुड नॉट बी जीरियाट्रिक पेशेंट नहीं होना चाहिए, पीडियाट्रिक पेशेंट नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी प्रेग्नेंट और यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस.
But once the market is the drug is available in market, there no restrictions. The patient is taking drug along with other drugs they are taking. उनको अलग बीमारी भी हो सकती है. Then funded by individual patient and their health plans, sometimes may be possible कि मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे हम लोग हेल्थ प्लान्स लेते हैं या कई बार कुछ इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो एक इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें आपको एज ए इंडिविजुअल दे कैन एनरोल यू. सो समटाइम्स फंडिंग भी फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाता है. रिक्वायर रियल टाइम डिसीजंस हियर. Whenever that physician or any treating medical practitioner is treating you, he can take a immediate decision. जबकि क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ है, दैट इट विल बी दे विल बी नोटिफाइड टू स्पॉन्सर. वो आपको अगर रेंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड है, ट्रिपल ब्लाइंड है, तो वो आपको रेंडमाइजेशन देखेंगे कौन सी ड्रग आपको दी जा रही है, देन दे विल टेक द डिसीजन. डेफिनेटली दे विल स्टॉप द मेडिसिन इमीडिएटली, बट यहाँ पर इमीडिएटली आपका फिजिशियन कैन टेक डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली ऑन इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम. How we assess that our activities in clinical trial and in medical treatment. So consent in clinical trial, as we know that informed consent is very much required from all the participant who is taking part in this clinical trial. But in routine therapy from physician, routine consultation, you don't require any kind of informed consent. Assessment involves periodically and systemic assessment of patient data. We know that whenever we are a part of clinical trial, every periodically whatever decided based on that protocol, हम लोगों को वहाँ जाना होता है. हम लोग के different parameters, demographic parameters लेते हैं, vitals लेते हैं. Then sometimes they require blood report है या any investigation they need to do that investigations. Every time as per the protocol, they need to act on that. But in clinical routine medical treatment, it is based on or as needed based on the patient uh, improvement, patient health. Suppose आप जा रहे हो follow up के लिए, तो जरूरी नहीं है कि every time he will ask you to go for X-ray or CT scan or blood report or something. Uh, so accordingly, patient condition, if you having improvement, they will not ask you to go for any investigation. But in clinical trial, whether you are improving or not, they have to take they have to do some investigations according protections. So in clinical trial, it will be protected by government agency, suppose Drug Controller General of India, regulatory authorities of a particular country where the clinical trial is being done, institutional review boards, professional standards, informed consent, legal standards. So there is a lot of checks are there for clinical trials. But this is not the same case in routine medical treatment. Definitely, they would be abide by the guidelines given by that medical boards or medical practice of a particular country, professional standards, peer review, informed consent. Sometimes, if you are a part of some investigator-initiated program, you have to give informed consent and legal standard. Definitely, that you are getting treatment as per that. As per guidelines for a particular treatment, or there should not be any uh, loophole in the treatment or something. So basically, medical treatment or current medical treatment where we are routinely following the physicians, they look into that and they give the drug. So they will come to know what exactly is happening for a particular drug in your body. But in clinical trial, the criteria is very stringent. So sometimes definitely safety and efficacy we look into that. But वो सब मार्केट में आने के बाद पता चलता है कि अगर अदर डिजीज में आपके संग क्या इम्पैक्ट रहेगा, अगर अदर ड्रग्स ले रहे हैं तो इज देयर एनी ड्रग इंटरेक्शन और नोट, क्या इम्पैक्ट रहेगा. तो दिस वी विल स्टडी आफ्टर once the drug is marketed. That's why we say phase 4 is the post marketing surveillance. After drug has been marketed, uske baad we do the trials. That is phase 4. Next slide please ma'am. Future of clinical research.
So, as Madam told, that India is rapidly emerging as the hub of global clinical researches because lot of regions are there. That is, India is the huge heterogeneous patient population of more than 1.3. Now it is more than near about 1.4 billion. We know that in India, there are a lot of different culture is there, different eatery habits is there, different language, different genetic structure. So there is a lot of difference in India itself. So generally, the companies prefer to do their research on that variety of people in one country. Largest pool of patients suffering from cancer, diabetes, hypertension, asthma, and any other infectious disease or degenerative diseases. So they also get very good pool of patients in India. Then patient doctor ratio is very high in India as compared to other foreign countries. The the qualification of healthcare professional, we are highly qualified and efficient healthcare professional as compared to other countries. Number of healthcare professionals are more, be it pharmacists, nursing, MBBS, BDS, or whatever it may be. So based these activity these advantage will give age to the or sponsors, और वो that's why they are coming to India for, because यहाँ पर हम लोगों को almost everything they are getting at one place. तो जिसकी वजह से they are coming, they are looking to India for conducting any clinical trial or any activities. Next slide, please, ma'am. Again, what is the advantages with India? As I told that patient diversity and heterogeneity, world-class medical infrastructure is available in India. Familiarity with वेस्टर्न मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसी कोई आज की डेट में ट्रीटमेंट नहीं है जो फॉरेन में हो रहा और हमारे यहाँ नहीं हो रहा हो, बल्कि वी आर समटाइम्स वी आर अहेड ऑफ देम. कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो वहां पर यूज हो रही हो, वी आर नॉट यूजिंग. सो वी आर एट पार विद देम. English competency, as we know that we are enough competent to talk in English and sometimes in other language also. Uh, then cost competency, patient recruitment is easier because of the lot of patients available. The timelines may be shorter because the patient, you will recruit the patient in a very less span of time, manpower, etc. ICA GCP guidelines implementation is being taken care of by DCGI. So project management competencies, we can manage that whole project with competency or with command. So this is also important. We have some certain laboratories who are accredited with national internationally. So we have central lab facilities, just like we can see that Religare, Thyrocare, Renbexy. There are a lot of labs are there. Those centrally they are working or they are covering all across India. The regulatory guidelines and government policies is helping clinical research in India. That is Ministry of Health, DCGI, Drug Control General of India, ICMR. So basically, we at India giving them lot of advantage, so they are looking for us to conduct or to coming to India or to set up their systems to do the clinical trials and any other activities related to clinical research. Next slide, please, ma'am. Now, domains in clinical research. Generally, what are the different domains in clinical research? Because clinical research is a very vast area. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को केवल एक क्लिनिकल रिसर्च है. देयर इज अ वेरी वेरी वास्ट एरिया. देयर lot of opportunities are available. So we can say that clinical trial process operation, clinical operations जिसको हम बोल सकते हैं, वो होते हैं जहाँ पर typically CRA या clinical team रहती है. Then they will look into the clinical trials, how it is being conducted, what is the requirement, वो सब देखती है. Clinical data management, that all the data is being टेकन केयर बाय डेटा मैनेजमेंट टीम. जो भी CRF में डेटा एंट्री होती है, उस डेटा को वापस सॉफ्टवेयर में डालना. एनी इफ देयर इज एनी मिस्टेक्स आर देयर, नीड टू रेक्टिफाई दैट. इफ देयर इज एनी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड, need to get in touch with investigator to rectify all these things.
Then medical writing में आपका protocol writing, CRF writing, ICF writing, information investigative brochure writing. So there are CSR clinical study report writing. So medical writing is also a part of clinical research. Pharmacovigilance, we know that reviewing of side effects, that is adverse event or serious adverse event, need to be reviewed at every stage of the clinical trial, even after the drug has been approved for marketing. Regulatory affairs, whenever we are doing any activities, first we need to apply to the regulatory affairs to grant a permission to conduct the clinical trial. Then at every step we need to submit a report to them, sometimes require a lot of approvals from them to conduct clinical trials. So regulatory affairs, we can go into the regulatory affairs. Quality assurance, each and every data need to be reviewed by QA team to maintain that integrity and cleanliness of data. So quality assurance department is also there. Business development, so definitely in business development जो बंदे होते हैं वो नई नई और कंपनी के पास जाते हैं, they just try to get the project from them. So business development is again a very important department. Now we see the types of clinical trial. कैसे हो सकते हैं? In-house trials. In-house trials means जो Indian companies है generally, उनके पास पूरा system होता है, पूरा field force होती है, पूरे employees department होता है clinical trial. They have their own employees. They right from scratch to and submission of the report to regulatory. They do their own work at each and every step. Then we have CROs, contract research organization, where they receive that either part of the work or whole work from the sponsor companies, that you need to do this work based on us or on behalf of us. So it depends upon what exactly what kind of work they give to the CRO. Sometimes they give कि आपको ठीक है clinical trial करना है. Sometimes they will कि आपको regulatory भी करनी है. Sometimes they will do that आपको PV pharmacovigilance का काम करना है. It depend upon sponsor कि वो क्या काम उनको assign करते हैं. So CRO will work accordingly what is been assigned to them. Then fully outsourced. Sometimes what happen जो global organizations होती हैं, suppose it is in US or Europe or whatever it may, where it may be, they generally outsource all activities to the CROs or any other organization, because they need to do the trial globally. So it is not possible for them at every place or at every site they keep their staff. So they will outsource to all activities to CROs, though the CROs who is having the staff and every facilities or infrastructure to conduct the clinical trials as per the requirement from um, high or very big sponsor companies. Next step, next slide, please. Then careers in clinical research. In first column, you can see that positions is coming from up to down. That means first mention is the first one is that very junior position, and you can see that coming to that towards the end of the table, it is highest position. So this is that only one domain, clinical trial operations, where we can start with clinical trial assistant, clinical, then we need to go for we shifted to CRA, then promoted to senior CRA, then we have clinical team leader, project manager, senior project manager. So basically depend upon that experience or your domain where you are there, so you can go as per your seniority. You can also go into that medical quality assurance and medical director. Generally, when you are in medical director and position, generally they prefer to person to be with the medic degree. But you can be associate director projects or director business development, associate director clinical. Generally they prefer to have medical degree. Again, uh, director, head clinical operations, they prefer there may be anyone, but for clinically related activities they require
clinical person. Then in second table, we have phase 1, 2, 3, 4 clinical trial where we can have multiple departments. We, as I mentioned in previous slides, that we have project management, the overall activities you are looking for, how the project is moving, how the supplies are being maintained, how to communicate with other things. So every part of the project you are managing. Drug development planning, they are in the labs where the drug, as madam previously showed in her slide, that drug development process start with lab. So you need to coordinate with lab to preclinical to clinical to um, regulatory submission to the finally approval of the drug. Then monitoring of the clinical trials, that CRA, senior CRA is required for that. So at every phase of the clinical trial, you require monitoring, source data verification. In monitoring, we do the source data verification that we should get the proper data, and that data should be with proper integrity. And then we have safety reporting. Safety reporting as income, we can say the pharmacovigilance also, with any AEs occurring, any SAE occurring, then we need to report it to the ethics committee. Regulatory SAEs, any SAE, if it is occurring, we need to report it in specific time frame to regulatory authority, to ethics committee. Then regulatory approval, QA audits, and business development. So these are the different department domain of the clinical trial where we can go into that, where we can explore the possibility to be with to be there. So there is an immense opportunity for the clinical research. If you are pursuing or you wanted to pursue your career in clinical research, there is n number of activities, n number of departments are there. You can go into there according to your interest, your education, or into your like or dislike, like that. Next slide, please. So with this, we conclude our presentation. So now me and madam both are open to answer any queries. If you have any, you can discuss anything related to clinical research. We'll try to resolve your queries. If not, then definitely we'll reach out to you with suitable answers. You can ask anything related to career, related to anything. We are open to it. Thank you, ma'am and sir, for delivering such a wonderful lecture, and I hope everyone understood this. And this is the first class, and this is a short introduction about the clinical research. And from onwards, you will get to know thorough information from each and everything in the clinical research. So, if you have any query, you can ask directly or in the message box or even in our WhatsApp group as well. So when you talk about all domains covered in courses, was that the question? I don't know. So pertaining to clinical research, yes, but then as you saw that we may not be touching upon everything pertaining to clinical research would be a part of it. But then there are other things like business development, further details about safety reporting, all that we will be just touching base. So there will be a lot of things that you will have to also read on your own. बट मोर और लेस क्लिनिकल रिसर्च के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब हम लोग कवर करेंगे. Because what happen in any domain, if you want to go, आपको basic clinical research की information होनी चाहिए in any domain. So वो we will provide that all the basic information which is required for all the domains or all the departments where we have shown, or there may be a lot of others also. So you will be having very basic knowledge of each and everything. Any other questions? I have seen, I think, hand raised by someone. Hello, ma'am. हेलो. या हेलो. हाँ, हेलो मैम. मेरे को ये पूछना था, एक क्वेरी थी कि
जो फार्माकोविजिलेंस है, CDM है, मतलब ये जो जितने भी डिपार्टमेंट है सब क्लिनिकल रिसर्च में ही आते हैं क्या? मतलब उनका सेपरेट डिपार्टमेंट रहता, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल, मेडिकल कोडिंग और CRA, रेगुलेटरी अफेयरेंस, ऐसा कुछ अलग अलग रहता है क्या? क्लिनिकल रिसर्च में ही आते हैं मैम सब? का नाम क्या है? उबैद। उबैद। Yeah, Obed, You actually, this overall is this comes in clinical research. Basically, all the departments are part of clinical research or clinical operations. Clinical operations, you can say that clinical trials जहाँ पर हो रहे हैं, but in clinical research you will see that clinical research, regulatory, pharmacovigilance, clinical data monitoring, data management, because everything is related to the trials. अगर आप trials ही नहीं कर रहे हो, then what is the use of clinical regulatory क्या करेगी? आपने trials ही नहीं किया. Pharmacovigilance क्या करेगा? आप trial ही नहीं कर रहे हो. So even marketed product के अगर आप एडवर्स इवेंट ले रहे हो तो वो फेज 4 काइंड ऑफ फेज 4 ट्रायल इज देयर. यू नीड टू प्रिपेयर PSUR report to and submit it to regulatory according to that. So basically every domain which we are discussing here comes under that umbrella of clinical research. Madam, would you like to add anything? Yeah, so I'll tell you very clearly, उबैद, कैसा होता है कोई भी कॉर्पोरेट में आप जाओगे तो वहां पे एक मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है? वहां पे यू हैव अ मेडिकल डिपार्टमेंट व्हिच हैज क्लिनिकल ऑपरेशंस, you have medical affairs, you have regulatory affairs, you have pharmacovigilance and quality medicine, ठीक है? तो ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, दिस इज, मैं जैसे बोल रही बहुत ही ज्यादा वास्ट है, लेकिन क्लिनिकल ऑपरेशंस इन सारे फंक्शंस के साथ काम करता है. So, for example, if you are entering into clinical research, you will have knowledge about pharmacovigilance. You will you should have some understanding about regulations because you are dealing with ethics committee. You will have no you will be a part of audits, which is a part of the quality. Okay, you will have to like talk to investigators with the help of your medical advisors. So it is not like you need to have knowledge about everything, but if you ask me, per se clinical research is not a मतलब स्टैंड अलोन नहीं है. और वहीं पे भी जैसे आपने बोला राइटिंग, मेडिकल राइटिंग, ये एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे कैसे जैसे अभी वो भी प्रोटोकॉल है या आपका इन्वेस्टिगेटिव ब्रोशर है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द मेडिकल राइटिंग टीम. सो इफ यू लुक एट इट, द गैमेट इज टू मतलब बहुत ही बड़ा है गैमेट. बट इफ यू हैव, लेकिन आई टेल यू वन थिंग कि अगर आपने क्लिनिकल ऑपरेशंस में एंटर किया है, तो जैसे मैंने बताया ना कि हर एक फंक्शन के बारे में आपको पता करना ही पड़ता है. दो यू मे बी जस्ट अ मॉनिटर, ओके, यू मे बी जस्ट टू स्टार्ट विद, दैट इज द एंट्री लेवल जहाँ पे आप क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च एसोसिएट बन रहे हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन रहे हो. लेकिन वहां पे आपको प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, IB के बारे में पता होना चाहिए, नो. सो यू अल्टीमेटली यू बिकम अ होलिस्टिक पर्सन, मतलब सभी का इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है. लेकिन आपको इन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा अलग सा एक हाथ ट्रेट, मतलब थोड़ा जैसे भी मेडिकल राइटिंग में थोड़ा सा मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लस आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, नो. तो वो जो भी क्वालिटीज है वो थोड़े से अलग अलग आपको लगते हैं. दैट इज एज सिंपल एज दैट. मैम मतलब मेडिकल राइटिंग, मेडिकल रिव्यू, मेडिकल कोडिंग, मतलब सब ये अलग आता क्या? सब डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट? आता है. यस यस यस. अच्छा. मतलब मेरे को और एक, मतलब मैम ये CRO और हेल्थ केयर ITs बोलते हैं मैम, दोनों में से डिफरेंस क्या है मैम? क्या दोनों सेम ही है? तो CR बोलिए. मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है. जैसे हमने बताया, हाँ, जैसे कॉग्निसेंट, IQVIA साउंड क्लियर है नहीं. या एक्सेंचर है. मैम साउंड क्लियर नहीं आ पा रहा है मैम. There सुनाई नहीं दे रहा है मैम. है या टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर.
Hello. Okay. हाँ Hello. Can you hear me now? ना, यस मैम, ना ओनली। तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि जैसे CRO जो है वो सारे ऑपरेशन करता है। जैसे मैं वहां पे मेडिकल राइटिंग का भी टीम रहता है, मेडिकल कोडिंग का भी टीम होता है, मॉनिटर्स का। हाँ, हेलो, यू कैन हियर मी स्टिल? मैम थोड़ा थोड़ा आवाज कट हो रही है। ओके, रोहित, इफ यू कैन जस्ट टॉक हियर, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज मेरा तो वाईफाई बराबर ही दिख रहा है। बोलिए मैम, अभी सही आ रहा है, बोलिए। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि हेल्थ केयर IT जो है, दे आर मोर इनटू डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस डेवलपमेंट। तो अच्छा जो आपको आपके डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, कैसे मैनेज करना है, सिग्नलिंग कैसे करना है, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारा ऑपरेटिव थिंग्स में जाता है। जैसे उसमें आपको रेगुलेटरी हेल्प भी मिलता है, फार्माकोविजिलेंस टीम मिलता है, मेडिकल राइटिंग, कोडिंग, एवरीथिंग यू गेट आउट देयर। इट इज जस्ट लाइक कि स्पॉन्सर आउटसोर्स कर रहा है, स्पॉन्सर जो नहीं कर पा रहा है वो CRO को बोल रहा है कि आप करो, आप मॉनिटर्स भेजो साइट पे, अच्छा आप फॉलो अप करो साइट पे। ओके, अच्छा। so this is the difference between IT. Total IT is all into data management and system generation. System जैसे कोडिंग का भी जो सिस्टम है या हाँ उसकी मैम। जो डिक्शनरीज है वो अप टू डेट रखना है। ये जो सिस्टम अपडेशन है वो IT करता है। तो IT इज अ वेरी, जैसे अगर आपको आपने फार्मेसी किया है एंड यू हाँ रियली मैम। हैव बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है IT में, you can always think about even working for IT, specifically for pharmaceuticals, because that is also a booming हाँ industry. मैम, मतलब हेल्थ केयर IT मतलब जैसा उधर सब जॉब कॉर्पोरेट टाइप रहते क्या मैम? मतलब इधर CRO में क्या है, फील्ड में जाके काम करना रहता है, ऐसा कुछ है क्या मैम? नो, ऐसा नहीं है कि सीआरओ में Yes. जाके फील्ड में काम करना पड़ता है। हाँ इफ यू आर इन सीआरए, तो आप चाहे स्पॉन्सर हो, चाहे आप सीआरओ में हो, चाहे आईटी कंपनीज में हो, अगर आप सीआरए हैं, यू हैव टू गो आउटसाइड, irrespective वेयर यू आर। हाँ, मेडिकल मैं राइटिंग में है तो हाँ आपको डेस्क जॉब है, या कोई एनी एनी अदर एक्टिविटीज यू आर डूइंग, तो वहां पर मतलब ऐसा नहीं है कि सीआरओ में है तो आपको बाहर जाना है, आईटी में तो नहीं जाना है, स्पॉन्सर में है तो नहीं जाना है। तो डिपेंड अपॉन किस आप डोमेन में हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके जो उनका वर्क असाइंड है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो आपको करनी पड़ेगी। हाँ सर, कौन सा डिपार्टमेंट, मतलब कौन सा है कि हम लोग कॉर्पोरेट, मतलब मैं चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट में जैसा लाइक डेस्कटॉप में काम करूँ, तो कौन सा डिपार्टमेंट है कि मैं उस पर ज्यादा फोकस कर पाऊँ? देखिए, हर What is हर the हर reason to that, उबैद? यस मैम। रीजन क्या है? मतलब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, जैसे अगर आपको IT भी करना है, मतलब हेल्थ केयर IT, यस मैम। अगर आपको सिस्टम सेट करना है कोई भी एक हॉस्पिटल के लिए, तो आपको यस उधर मैम। ट्रैवल करना ही पड़ेगा। सो ट्रैवल इज, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट? आर यू लुकिंग जस्ट एट अ डेस्क जॉब? यस And मैम, why लाइक the कॉर्पोरेट। reason, why is that? I mean, see, what I feel that वो एक लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आगे चल के आपको वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। जैसे अगर आप मेडिकल राइटिंग है, मेडिकल कोडिंग है, CDM रिव्यूअर है। है, ये CDM सब भी, हाँ। आप, CDM है, हाँ, हाँ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। हाँ लेकिन आई हैव टू, मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि ये ना, बोलने के लिए ठीक है, एंड सी देयर इज नथिंग लाइक डेस्क जॉब है तो कॉर्पोरेट जॉब है। यस मैम। Because even if a CRA is working in a corporate setup, he is traveling, और अभी तो रिमोट मॉनिटरिंग भी आ रहा है जो आप अपने जगह, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है when you are on the site and you're doing it online, it is हाँ मैम। definitely huge difference होता है उसमें। क्योंकि जब आप वर्चुअली करते हो वो टाइम पे तो सब अच्छा लगेगा, लेकिन जब एक्चुअली डेटाबेस लॉक होता है, यू विल हैव सो मेनी इश्यूज, बिकॉज वर्चुअली बहुत सारी चीजें आप छुपा सकते हो। अच्छा तो आई मीन आई वुड रिक्वेस्ट यू, व्हाट हैव यू डन, उबैद? मैम, फाइनल ईयर B.Pharm।
So I don't think that आपको ना ये क्राइटेरिया रखना चाहिए कि मुझे ऐसे ही जॉब्स में जाना है. आप जाओ, मतलब आई एम परफेक्टली ओके. मतलब then you look at medical coding or the CDM or medical writing or something like that. But I have to, मतलब मुझे warn करना है आपको कि ये आगे चल के बहुत ही ज्यादा monotonous हो जाएगा. हाँ, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि लिमिट मत करो, ये कोई क्राइटेरिया मत रखिए कि मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए. बिकॉज आपको अभी का नहीं, आपको आपके कंफर्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे के बारे में सोचना. आपका व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आप आगे क्या करना चाहते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके. मतलब मोर और मेरे को मैं वो कोडिंग, मतलब मेडिकल कोडिंग और टैस, इसमें मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था मैम, इसलिए मैं मतलब पूछ रहा था. नहीं नहीं, योर कंसर्न इज वेरी फाइन कि आपको इंटरेस्ट है, बट आप ऐसे मत जाओ कि वहां पर डेस्क जॉब होगी तब मैं जाऊंगा. एग्जैक्टली. नो नो, मतलब डेस्क जॉब में आप लिटरली वी आर सेइंग कि 6 मंथ में यू विल बी फेड अप. जब एक ही जगह पे एक ही प्रोटोकॉल बनाना है ना, तो हाँ लिटरली यू विल फेड अप. हाँ, सही है सर, वो भी है. अच्छा, दूसरा क्या है कि अब मैं तो खुद सीआरए पे काम किया हुआ है, तो जब आप सीआरए पे जाके आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो वो आगे जाके आपके मे बी 1 ईयर और 2 ईयर तक अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं सीआरए का, तो वो जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो हाँ इमेंस मतलब एक्सपीरियंस है. आपको बेसिक पता चल गया. अब आप जैसे मैं कहता हूँ, आप एक कंपनी के मालिक बन जाओ और एक आप कंपनी में मार्केटिंग कर करके ऊपर जाओ, आप किसकी ज्यादा नॉलेज होगी, एक जनरल मैनेजर डायरेक्ट बनाया उसकी, या आपने जो सीडीओ से ऊपर तक चढ़ के गए उसकी? हाँ सर, हमारी इसकी होगी सर, पूरा नॉलेज है इतना सर. क्योंकि आपको, आप मार्केट में उतरो, आपको पता है दिक्कत क्या है. जनरल मैनेजर तो कह देगा आप ये सेल करो. अरे भाई, आपको पता है कि ये सेल किस सीजन में होगी, किस जगह पे होगी, किस दुकान पे होगी. तो वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप डॉक्यूमेंट भी पढ़ोगे, प्रोटोकॉल भी पढ़ोगे, तो हो सकता है 4 गलतियां भी निकालोगे उसमें से, कैसे काम करना है. तो मतलब कोई भी स्टूडेंट, आई वुड से नॉट यू, हाँ नो सर. स्टूडेंट एज मैडम टोल्ड के शुड नॉट लिमिट के मेरे को यही करना है. अब अगर धीरे धीरे मॉनिटरिंग ही बंद हो जाएगी, तो फिर मॉनिटरिंग रिमोट होने लगे, मैडम टोल्ड. मतलब आई कैन से दैट विद इन 2 to 3 ईयर और 4 ईयर मॉनिटरिंग ही बंद हो जाएगी. ओनली very exceptional you need to go to that monitoring. अच्छा सर, ऐसा ही है. So you should not limit yourself कि मेरे को यही करना है और वही करना है. एक्सप्लोर इनिशियल कैरियर में, आप अपने हमेशा ये एक्सप्लोर रखिए कि आई कैन गो एट एनीवेयर, मेरे को तो कहीं भी भेजेंगे मैं चला जाऊंगा. दिस शुड बी द आइडियल, मतलब आपका अप्रोच होना चाहिए. हाँ सर, सही, ठीक है सर. सर और एक सवाल था सर, कि हमारे जो सीनियर बोल रहे हैं थोड़ा, मतलब जिस मतलब ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन फार्म डी को और एम फार्म को प्रेफर कर रहे हैं, बी फार्म को अभी कम प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा सुना है मैं सर. ऐसा कुछ है क्या सर? हायर देखो, क्वालिफिकेशन थोड़ा को सा फर्क है, प्रेफर कर रहे हैं. थोड़ा सा फर्क है. आई विल नॉट से कि इट इज 100% रॉन्ग, बट थोड़ा सा डेफिनेटली दे प्रिफर बी फॉर्म, एम फॉर्म और फॉर्म डी ओवर बी फॉर्म. बट अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह है, तो दे विल प्रिफर यू आल्सो. बिकॉज क्या होता है कि वो ये मान के चलेंगे आफ्टर दिस कोर्स कि आपको वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्लिनिकल रिसर्च पता है. अभी क्या हाँ होता है कि अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर बी फॉर्म जाते हो, वहां पर आपको यही नहीं पता क्लिनिकल रिसर्च क्या है, यू विल टेक टाइम. बट अगर आप ये कोर्स करते हो, तो बेसिक में 100% नहीं, बट एटलीस्ट बेसिक 60-70% आपको पता है कि क्लिनिकल रिसर्च कहते किसे हैं, अब वो फेज 1 बता रहे हैं, आपको यही नहीं पता फेज क्या होता है क्लिनिकल रिसर्च में. सर. एक अंडर आपका क्लासमेट है, उसने आपकी कोर्स नहीं किया और एक आपने कोर्स किया है. ठीक है, तो आपको जैसे ही वो बताना शुरू करेंगे फेज 1 फेज 2, आपको रिकलेक्ट हो जाएगा, नहीं मैंने पढ़ा था, ये फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है, इसमें ये चीज होती है, उसमें ये चीज होती है. तो आपको समझने में और आपको इन लाइन आने में बहुत कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू जो फ्रेशर है जिसने क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स नहीं किया है. तो हाँ ये एडवांटेज मिलता है. ऐसा नहीं है कि बी फॉर्म वालों को जॉब नहीं मिलती है, या फिर इट इज नॉट लाइक दैट. नहीं, मतलब ज्यादा बड़े बड़े जो एमएनसी कंपनी है उनमें ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं बोल के ऐसा सुना सर मैं, फार्म डी नहीं, वालों को ऐसा जो कुछ नहीं है. ज्यादा. ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेफर नहीं कर रहे हैं. आपको नॉलेज होना चाहिए. अगर वो फार्म डी करके हो सकता है जॉब जल्दी मिल जाए, बट अल्टीमेट आपको आपको नॉलेज अप्लाई करना पड़ेगा. बिना नॉलेज अप्लाई किए कोई नहीं सर्वाइव करता इंडस्ट्री में. ओके, थैंक यू सर. So one very important thing is that कि जब फार्म डी आप करते हो, ओके, हाँ तो हाँ मैम. आपका जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब जो स्टूडेंट का जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही हाई होता है. तो वो लोग क्या चाहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट लीडर बन जाए.
ओके हाँ मैम, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है एंड दैट इज एटलीस्ट इफ यू आस्क मी आई नेवर प्रेफर फार्म डीज, मैंने कभी फार्म डी को लिया नहीं है हाँ बिकॉज मैम, द ओनली रीजन इज दैट आपको स्टेप 1 से ही आप स्टेप 5 तक जा सकते हो, तो सही है वहां मैम, पे उनका बिकॉज हमने 6 साल ये किया है, यू नो वी हैव फार्म, स्पेंड and यस, so hum log ko so that is what Rohit also said, like I would prefer a B farm or an M farm, and especially जब मुझे पता है कि इसको एटलीस्ट बेसिक्स पता है, बिकॉज हर कॉर्पोरेट का स्टाइल ऑफ वर्किंग इज वेरी वेरी डिफरेंट, तो आई ऑलवेज वांट अ ब्लैक बोर्ड, मतलब जहां पे मैं लिख सकूं, मैं उसको उनको सिखा सकूं, लेकिन जो बेसिक जो भी नॉलेज है वो तो होना ही चाहिए, मतलब अगर मैंने बोला एई जैसे एडवर्स इवेंट, यस मैम, तो वो आपको या सीटी क्लिनिकल ट्रायल या सीआरए, मतलब एटलीस्ट तुमको पता है, हमारे इसमें कैसे वो बहुत ही जैसे कॉमन हो जाता है ना कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, जैसे आप लोग अभी के बच्चे कैसे बात करते हैं, नो आई डोंट नो आईडीके एंड टाइप्स यस लाइक दैट, मैम, तो हमारे लिए वो हाँ वाले सब, एप्लीकेशंस कॉमन हो जाते हैं, तो यू फील मच मोर इजी कि चलो ये बंदे को पता है, हर बार मुझे वो पूरा वर्ड बताना है नो, so there's हाँ always a मैम, difference, तो ऐसा कुछ नहीं है, and again it all depends upon your attitude, मतलब यस, अगर आपने सही एटीट्यूड, मैं इसके पहले वाले बैच को भी यही बोला है कि आजकल का जो कॉर्पोरेट सेटअप है, दे आर नॉट लुकिंग एट कितना नॉलेज है आप में, बिकॉज हाँ आए दिन कुछ ना कुछ, इवन हम लोग जैसे हम आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट 16.5 years, लेकिन फिर भी हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और अभी जैसे डिजिटल नो एआई हाँ आ रहा मैम, है, मशीन लर्निंग आ रहा है, हाँ so हाँ learning new things every day, so everybody cannot be like पूरी तरह तैयार होके कभी भी नहीं आ सकता है, लेकिन वही जो आपका जो पैशन है या जो एटीट्यूड है कि हाँ मैं जो भी चेंजेस आते हैं मैं उसमें एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आई थिंक दैट इज व्हाट इज बीइंग लुक्ड एट, ओके, यस, आई थिंक somebody has asked for some what are the skill sets required. I think we have a session already which details about the skills that are required, and we will be going through that because abhi to itna time nahi hai ki hum log wo le. Somebody has asked what are the कौन से desk job है, again Tanvi I would still suggest कि पहले तो आप ये पता करिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया कहाँ पर है, एंड एज आई सेड कि फार्मा कॉर्पोरेट में जाने के लिए अभी बिकॉज देर इज नो डिग्री नहीं है फॉर क्लिनिकल ऑपरेशंस, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, ऐसा कोई भी डिग्री नहीं है, लेकिन इट इज इजी इफ यू get knowledge from these certification courses, because as I said ये जो certification courses है ये industry personals लेते हैं, तो हम लोग जो आपको बताते हैं वो कोई बुक में नहीं लिखा है, of course definitions and things like that are always in a book, but then जो भी और regulations जो है वो change नहीं होते हैं, लेकिन जो practical application जो है वो आपको ऐसे certification courses में पता होते हैं, so don't limit yourself to desk jobs, okay, say I know sale, Hello, I mean no one wants to go into sales, yeah. ma'am. I want to know how many or which company that conduct clinical trial in India. I mean, in different company, they different clinical trial, or all the company which will try same. I think lot of companies you cannot count the companies are in clinical trial. Almost every company have clinical trial uh, because this is the legal requirement to come up with new drug. You have to do the clinical trial. So either they will do the clinical trial, either they will outsource the activities to the CROs or any other companies. So every company has every company had to do all these activities. बहुत Yes, sir. बड़ी लिस्ट है, आप गूगल में जाके देख सकते हो, लेकिन अभी बहुत सारे जैसे मैंने बोला कि सिर्फ कंपनीज ही नहीं, लेकिन अभी सीआरओज भी काफी इन्वॉल्व है क्लिनिकल ट्रायल्स में, Ma'am, but it is economical, na? So that's why. एग्जैक्टली तो इंडिया में इवन ग्लोबल ऑपरेशंस आउटसोर्स होते हैं, तो जैसे किसी ने पूछा, वो उबैद ने पूछा अबाउट हेल्थ केयर आईटी, तो ये जो कॉग्निसेंट है ये लोग ये दे हैव द एंटायर ग्लोबल फंक्शंस व्हिच इज आउटसोर्स्ड, वो सारा डेस्क जॉब्स है,
और क्लिनिकल रिसर्च जो है वो भी इंडिया में तो करना ही है, बिकॉज वी सॉ ना कि पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, डेटा दैट यू गेट from doing it is economical, we have good structure, मतलब infrastructure भी बहुत अच्छा है, so there are lot many advantages that we have. Okay, ma'am. Thank you. I think hand raised by Aman and Vijay. Would you like to ask Aman and Vijay if you have any questions? Sir, I ask now. Okay, okay. मैम ये इंस्टीट्यूट जो है मतलब तुम्हारा जो ग्लोबल फार्मा महाराष्ट्र का है क्या मैम? मतलब ऑफलाइन भी चलता है क्या, सिर्फ ऑनलाइन ही चलता है मैम? सर Amit sir. No, we are like from Pune, yes, but जो courses होते हैं वो all online courses. ओके Courses online होते हैं because all admissions from all over the India, so इसके लिए हम online ही रखते हैं, yes. मतलब तुम्हारा इंस्टीट्यूट है पुणे से है सर? Exactly.